Hello, good afternoon. Welcome to CAC Science. Today we are here to discuss some of the questions regarding art and culture. आमे art and culture पाखी theories. ये सब theories पढ़ी सारला परे we will definitely try to do some of the questions. Some of the questions will enhance the capability of our answering capability. बढ़ेबो. तापरे we will be identifying also कि section अछि को. I'll also tell you कि केमती question appear करंती माने answers find out करंती से जिनसरा भी तुमको आज कहिबी हला. In general I also tell these kinds of tricks in माने discussion hall कि जतले क्वेश्चन देखिबो ताले क्वेश्चन को केमिति इंटरप्रेट करबा और केमिति ता आंसर पाखरे पहुंचीबो सेटा इंपोर्टेंट. तुमको एग्जैक्टली से सेम वर्डिंग्स मने अछि न मने अछि that is not important in the question answer round, right? यदि कहि कि we will start the class. Before good afternoon, before starting the class I would like to know कि audio video clear अछि ना नहीं. Please let me know audio video, then we will start, right? All clear? सब देखाओ जी सुबुची चलो okay. We'll start the class, right? Now, which of the following best explains the architectural function of pidha tires? Pidha tires माने pidha देवलर आर्किटेक्चरल स्टाइलिंग को को दिनस जस्टिफाई करूची से दिनस क्वेश्चन पचारुची. जगन्नाथ माने जगन्नाथ मंदिर हो कि लिंगराज मंदिर हो सब आड़े गोटे जगमोहन तुम देखिबो. से जगमोहन रे तुमको पीढ़ा देवल देखिया को मिलेबो, करेक्ट? तो से पीढ़ा देवलर बेसिक फंक्शनैलिटी कोन काहे कि पीढ़ा देवल हेता है माने हम समस्त जानछे आर्ट एंड कल्चर क्लास रे म कहितली जे जोटा रेखा देवल हेतिबो सेटा तमरो गर्भगृह जोठी ठाकुर बसंती सेठी हेतिबो, करेक्ट? तेबे तापरे कोन आसे तापरे जोटा तमरो भक्त मानकर समागम पय असेंबली हॉल जोटा आसे सेटा जगमोहन आसे और जगमोहन रे टिके एमिति पिरामिडल शेप रे हेता है. तो एई जो पिरामिडल शेप रे हेता है एटा को ही हमें पीढ़ा देवल बोली कहू. पीढ़ा वलिया स्ट्रक्चर तार हेता है. एटा गोटे एमिति स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर थाए जोटा पीढ़ा वलिया हेता है. तो सेति पे एटा को पीढ़ा देवल कहआ जाय, करेक्ट? एई पीढ़ा देवल रो फंक्शनैलिटी कोन से दिनस क्वेश्चन पचार. You will look into the option जदि देखिबा ताले कोन to reduce lateral thrust from the रेखा देवल not linked काहे रेखा देवल गोटे अलगा टेम्पल पीढ़ा देवल गोटे अलगा सेगमेंट. तो पीढ़ा देवल और रेखा देवल भितरे lateral thrust रेखा देवल रो पीढ़ा देवल ऊपर पड़िबो सेमति भी किछि माने नाही. To create a pyramidal superstructure facilitating congregational visibility हे पारे. congregational visibility माने pyramidal structure हला एठी मंदिरटा दूर रु भी देखा जिवो से भला स्ट्रक्चर एठी सामने करा. दीटा जाक जदी रेखा देवल करा हबो ताले मेन जो सैंक्टम सैंक्टोरम अछि गर्भगृह जोठी अछि ठाकुर जोठी बसचंदी सेटा दूर रु विजिबल हबनी. आ ए जो ध्वज ए जो तांगर माने पतित पावन ध्वज जोटा अछि से ध्वजटा भी देखा जिवो नाही. तो कांग्रीगेशनल विजिबिलिटी पय हेथाय पारे ए पीढ़ा देवलटा सेमिति फॉर्मेशन हेछि, राइट? तो सेतमे टिके लोअर शेप रो स्ट्रक्चर भी दिया हेछि टिके लोअर हाइट रहिछि विजिबिलिटी हेथाय पारे. बट वी विल सी अदर ऑप्शंस आल्सो टू सिंबलाइज द कॉस्मिक माउंटेन मेरू थ्रू वर्टिकल कर्वेचर पय देखो माउंट मेरू जदि हमें इंडियन कॉस्मोलॉजी भीतर को जिबा ताले इंडियन कॉस्मोलॉजी भितरे एमिति किछटा स्लैब टाइप रो स्ट्रक्चर अछि. माउंट मेरू इज बेसिकली theoretical रे माउंट मेरू symbolizes the connection from पाताल रु स्वर्ग पर्यंत कनेक्शन. तो पाताल रे अनंत नाग शयन नाग 3-4टा राउंड मारथिबो से सही राउंड टाको इट इज माने जो स्लैब्स रे डिनोट करा जाय. देन देयर इज ए पिरामिडिकल स्ट्रक्चर. तापरे एठी गोटे पिरामिडिकल स्ट्रक्चर अछि. तो ए पिरामिडिकल स्ट्रक्चरटा एथि पय डिनोट करे. तो एथिरे हमरो मंदिर रो किछि लेन देन नाही. ए स्ट्रक्चरटा तमे कोठ देखिया को पाइथिबो ए स्ट्रक्चरटा तमे एंकर वॉट टेम्पल्स रे देखिया को पाइथिबो. ता माने साउथ ईस्ट एशियन टेम्पल्स जतबेला हम देखिबा सेतबेले एई माउंट मेरू रो सिंबॉलिक मीनिंग सेठी देखिया को पाइबा. तो एग्जांपल रे एंकर वॉट टेम्पल एई प्रकार रो स्ट्रक्चर रे तयारी हेछि. और एंकर वॉट टेम्पल symbolizes the Mount Meru. Cosmic symbolism Angkor Wat temple रो तयारी हेछि. माने तळे फर्स्ट 3-4टा बेस तयारी हेतिबो माने स्लैब टाइप रो 3-4टा बेस तयारी हेतो ता ऊपर गोटे पिरामिडिकल स्ट्रक्चर थिबो एंड से पिरामिडिकल स्ट्रक्चर तमरो माउंट मेरू रो सिंबॉलिक मीनिंग करा दो. तो ए ऑप्शन भी काटियो. टू एक्ट एज ए बेस फॉर अमलक प्लेसमेंट
बेस फॉर अम्लक प्लेसमेंट मंदिर पाखे एठी गोटे बेकी फॉर्मेशन हुए ए बेकीटा होची तमरो अम्लक प्लेसमेंट पय बेस ता ऊपर तमरो एठी अम्लकटा रहिछि एटा तमरो अम्लकटा तो बेकी प्लेसमेंट इज देयर फॉर अम्लक तो सेत पय पीढ़ा देउळर किछि काम नाही एंटायरली तो ऑब्वियसली आंसरटा ऑप्शन बी हे जाउछि you will have to reach out to the answer exactly तमे जदी जानिछो भी ताहले भी गोटे दिटा ऑप्शन जदी चेक करि परिबो then it is also fine माने if you are not sure about the answer ताहले गोटे दिटा ऑप्शन चेक करि परिबो if you know the answer basically congregational पई ही पिडा देउलट को शटर करा हला रेखा देउलट को ऊपर ऊपर रखाइछि जेम तमे पुरी मंदिर जाउछ दूर रु ही तुमको पुरी मंदिर देखा जिवो तो सेमिति स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर रे एडा को तयारी करा हिछि माने नाट मंदिर भोग मंडप नाट मंदिर जगमोहन एंड देन दी पिडा देउळ करेक्ट then the rekha deul sir then chalo moving on to the next question karo if you want you can answer side by side kichh asudha nahi तुमको भी side by side answer कर परतो I'll check if your answer is also correct or not right देखो consider the following statements regarding pancharatha plan in Odisha temples correct pancharatha plan re Odisha temple विषय रे देखो it includes projection known as raha anuratha and kanika paga the central raha paga is usually the most prominent projection it is exclusively associated with Vaishnava temples तो एबे बेसिकली जो पागस विषय कथा होचंती पंचरथ प्लान ता कोन हमें डिस्कस करथिले क्लास रे व्हेन आई हैड टोल्ड अबाउट द पंचरथ प्लान मु पंचरथ प्लान कहथिली देखो एमती गोडो वॉल थाए जोडा कि बेसिक स्ट्रक्चर रे चारिटा कांथ एमती तयारी हुए आ चारिटा कांथ तयारी हे सला परे ए भीतर तमरो रूम टा हुए राइट किंतु एमिति मंदिर स्ट्रक्चर हे नथिला मंदिर जतल बिल्ड करा हला कोन करा हला ए जो वॉल स्टाइल रु से माने डेविएट करि गेले डेविएट केमती कले मंदिर रो गोटे सेक्शन रो वॉल टाकू डिवाइड कर देले पांचटा रथ हिसाब रे डिवाइड कर देले एटा को कहा जाय रथ करेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज पंचरथ यदि ए गोटे वॉल टा पांचटा सेक्शन रे डिवाइड करा हेतिबो ताले एटा को पंचरथ प्लान कहा जाय ता माने मंदिरटा एम्ति बिल्ड हेताय आ एठी किछिटा देवी देवता थांती माने वॉल जदि हम देखबा एम्ति गोटे वॉल अछि तो ए वॉल उट अछि आ गोटे वॉल ता पछकु शिफ्ट हेगिथिबो आ गोटे वॉल ता पछकु शिफ्ट हेगिथिबो तो एम्ति गोटे स्फीयर माने एम्ति कर्व टाइप रो स्ट्रक्चर समान नै के आछंती राइट तो जो कर्व टाइप रो स्ट्रक्चर से माने नै के आसंती से कर्व टाइप रो स्ट्रक्चर रे बेसिकली एमान को देखिया को मिले जे कोन ते एइटो ए जो रथ गुडा अछि ए रथ भितर डिफरेंट डिफरेंट नेम अछि ए जो सेंट्रल एक्सिस रे जो रथडा थाए एटा को कहा जाय राहा पाग करेक्ट तापर ए जो पाग गुडा अछि दीस आर तमरो अनुरथ पाग एंड दी कानिका पाग जदि सप्तरथ है ताहले कानिका पाग आहुरी बढ़िबो राहा पागटा सेंट्रल आ सेंट्रल एक्सिस रे रहइबो त माने मझी रे जो वॉल सेगमेंट अछि सेटा होछि तमरो राहा पाग राइट गुड आफ्टरनून ए जो राहा पागटा रहिला ए राहा पागटा कोन पई डिजाइन हेताय माने सेंट्रल एक्सिस प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन एटा सबटु बाहर की थिबो एटा जदि सबटु बाहर की थिबो ता माने सब वॉल जदि अछि वॉल सेगमेंट अछि ए वॉल सेगमेंट सेंट्रल रे सबटु अधिका बाहर की अछि ता पर को आ गोटे वॉल लागिछि ए जो सेंट्रल सेगमेंट रे अछि ए सेगमेंट रे बहुत सारा स्कल्पचर तयारी हेछि यू वांट आई कैन शो यू ऑन दी ଗୋଟେ ଇମେଜ ଦେଖିଦବା then discuss just a second so you can see here ए जो टेंपल स्ट्रक्चर अछि इफ इट इज विजिबल ताले ए जो टेंपल स्ट्रक्चर अछि ए जो गोटे कर्विलिनियर शेप अछि ए कर्विलिनियर शेप डा गोटे सिंगल वॉल रे डेडिकेट करा जाय
मंदिर वॉल टा केबे भी स्ट्रेट हे न थाए माने गोटे स्ट्रेट वॉल नुहे एटा गोटे कर्वी लिनियर पाथ रे तयारी करा तो ये जो सेंट्रल प्रोजेक्शन टा जोटा सबुठु अधिका प्रोमिनेंट हे अछि जो सबुठु अधिका बाहर के अछि एटा अछि तमर राहा पाग देन तमर अनुरथ देन तमर कानिका पाग एमिति सेगमेंट रे डिवाइड हे अछि क्लियर now now answer the question ebe answer kara question को it includes projection known as raha anurath and kanika pago yes pancharath plan रे ए दिनसटा अछि सबु पागो को से शो करे और सबु पागो को शोकेस करा जाए तो yes this statement is correct the central raha pago is usually the most prominent projection this statement is also correct जोटा central raha pago center axis रे रुहे सेटा ही सबुटु prominent section रुहे it is exclusively associated with Vaishnava temples ए statement ता कोन कोची exclusively associated हबो नाही काहे किना लिंगराज टेम्पल रे भी हमें एई पाग देखुचे करेक्ट तापर इंडिया सारा जति भी टेम्पल सब बिल्ड हेची अंडर द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हो कि तमरो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हो कोनोसी टेम्पल आर्किटेक्चर रे फ्लैट वॉल्स हमें देखे तमाने सब टेम्पल आर्किटेक्चर रे एई रथ स्टाइल रो प्लानिंग टा तयारी हुए तो दैट इज व्हाई एक्सक्लूसिवली फॉर वैष्णव टेम्पल्स ए स्टेटमेंट टा फॉल्स हे जिवो आंसर कोन हबो क्लियर गुड गुड मोनालिसा moving on to the next question in Odisha temple architecture the Bada division consists of which of the following components को components Bada division टा को component को follow करे किंबा को component Bada division रे अछि एडी मु दीटा क्वेश्चन एका थरे सॉल्व कर देबी 1 मिनिट तभी तुमको देख पेज रे एंड दी जाक क्वेश्चन गोटे थरे आगु को भी गोटे क्वेश्चन अछि सेठी मु देखै दे this image is wrong हला ए इमेज टा भूल अछि तो जदी देखिबो ए इमेज टा को फर्दर स्टडी करिवो नाही you can see this image गोटे तो एटा तमरो मु पीडीएफ रे भी देछि तमरो बेस प्लान ऑफ द टेंपल द गर्भगृह जगमोहन देन नाट मंदिर देन भोग मंडप सेटा तो आई हैव गिवन यू देयर you see this image ए इमेज टा जदी तुमको देखा जाउथबो or not visible होची visible देखो एटा तमरो 12 पार्ट टा करेक्ट आ तळकु कोन अछि आ तळकु पिस्टा बोली अछि पीडा जोटा तमरो बेस स्ट्रक्चर हुए ए बेस ऊपर मंदिर बिल्ड हुए ए जो बेस स्ट्रक्चर टा एक्चुअली फाउंडेशनल स्ट्रक्चर मंदिर रो ता तळकु बाली बहुत दिया हिता ताकि सेरा अर्थक्वेक प्रूफ माने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हे परिबो ता तळे तमरो ता ऊपर को तमरो 12 पार्ट अछि ए जो 12 पार्ट टा अछि एथिरे कोन एटा होछि पभाग जोटा कि तमरो पाद पार्ट टा फुट पार्ट टा पभाग बोली कहआ जाय देन तमरो तळ जंग अछि तळ जंग आ ऊपर जंग मझिरे गोटे बंधन अछि ऊपर जंग ऊपर को रहले एटा बारंडा टा करेक्ट एटा जो बारंडा लेखा हिची एटा ही तमरो ए जो 12 पार्ट टा आउ गंडी पार्ट टा दिस इज योर एटा तमरो गंडी पार्ट बोली कहआ जाय तो ए गंडी पार्ट आ 12 पार्ट को के डिवाइड करूची तम बारंडा पार्ट टा डिवाइड करूची फर्स्ट सेकंड ए गंडी पार्ट रे भी हम कोन देखुचे एटा देखो एटा होची राहा पाग एटा होची अनुरथ पाग देन तमरो कानिका पाग एमती सेगमेंट रे डिवाइड हेकी अछि ए इमेज टा मु देई भी थिली पीडीएफ रे जो माने नोट्स पाइछंती you must have seen that ता ऊपर कोन कहआ जाय एटा मस्तक इट इज सिमिलर टू ए ह्यूमन स्ट्रक्चर ता माने जदी गुटे मनुष्य ठिया हबो तार मस्तक पार्ट गंडी पार्ट एंड देन तांकर तळ माने गंडी तळको पार्ट टा जोटा 12 पार्ट कहआ जाय तेते तमरो कोन पाद तळ जंग बंधन ऊपर जंग बारंडा आ तापर रहइबो कोन तमरो गंडी पार्ट टा एटा होची तमरो कर्वी लिनियर एंड होची देन एटा तमरो बेकी अम्लक अम्लक परे एटा तमरो खपुरी खपुरी ऊपर रहइबो कळस कळस ऊपर तमरो पतित पावन बाना कि तमरो ध्वज जोटा भी रहइबो तापर अयुद्ध रहइबो अयुद्ध पाखरे तमरो ध्वज रहइबो करेक्ट एति कि तमरो मस्तक पार्ट एटा तमरो गंडी पार्ट एंड एटा तमरो बाड़ पार्ट एति कि बुझिलो नाउ कम टू द क्वेश्चन yes now come to the question Bada division consists of which of the following pavaga jangha baranda
राहा अनुराध राहा अनुरथ एंड कानिका एटा तो हबनी डेफिनेटली राहा अनुरथ कानिका एटा तो हबनी मस्तक गंडी अम्लक एटा भी हबनी जगमोहन नाट मंदिर एटा तो डायरेक्ट आंसर मु भी तुमको इमेज देखेली तो यू कैन गेट द डायरेक्ट आंसर फ्रॉम पभाग जंग एंड बारंडा दे कंप्राइज द बाड़ पार्ट ऑफ द टेंपल राइट आगु बढ़िया which of the following temples is known for the earliest fully developed torano in Odisha fully developed torano in Odisha image भी देखैथिली क्लास रे ट्राई करो if you answer this ताले हम जानिबा जे क्लास रो हमको बहुत दिनस मने अछि राइट any one of you can answer समस्त आंसर करबा भी कंपलसरी नो गुड मुक्तेश्वरा टेंपल लिंगराज टेंपल वी नो फॉर द अयुद्ध एटा हरिहर कल्ट को डेडिकेट करे तो सेति सेटा फेमस राजारानी टेंपल बेसिकली इज आल्सो कॉल्ड एज द इंद्रेश्वर टेंपल इंद्र रथ बिल्ड करथिले तो एथिरे बेसिकली कोनोसी डेटिंग को पूजा करा जायनी कोनोसी ठाकुर ता भीतर नाहंती नवग्रह पैनल यस दैट इज देयर बट राजारानी टेंपल इज सिमिलर टू दियर माने बुंदेलखंड रे जेमती खजुराहो टेंपल्स अछि तो से ता सहित ही सिमिलर तो राजारानी टेंपल एक्सोटिक स्क्रिप्चर्स पई सेटा जाना जाय राजारानी टेंपल इज फेमस फॉर दैट मुक्तेश्वर टेंपल इज फेमस फॉर द तोरण इंट्रिकेट कार्विंग्स इंट्रिकेट गेटवे से गेटवे भी देखैथिली क्लास रे इंट्रिकेट कार्विंग पे फेमस से जो गेटवे टा अछि दैट इज द मोस्ट माने एक्सेप्शनल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोले कहै जाय परशुरामेश्वर टेंपल इज आल्सो फेमस बट सेटा माने तार किछि खास डेवलपमेंट सेतल हेई नथला तो जगमोहन पूरा कंप्लीटली डेवलप हेई नथला तार जगमोहनटा सेमती बहुत ही शॉर्ट हाइटेड था दैट इमेज आल्सो वी हैव गिवन यू इन द पीडीएफ राइट नेक्स्ट अनसर रिचुअल इन जगन्नाथ ट्रेडिशन रेफर्स टू अनसर रिचुअल टा जगन्नाथ ट्रेडिशन रे काहा को रेफर करे Shiv, why there is no lingam at Lingaraj? I did not get your question. Lingaraj re to mane shivling is there. No lingam mane. I couldn't get your question. Lingaraj temple re to शिवलिंग अछि. Correct? चलो. एबे कोन देखिबा? अनसर रिचुअल टा कोन? बेसिकली गोटे रिचुअल थाए स्नान पूर्णिमा. स्नान पूर्णिमा रे ठाकुर 108 कलशरु स्नान करंती. करेक्ट तो ये स्नान पूर्णिमा परे परे ठाकुर को कौन हुए ज्वर हुए ठाकुर को ज्वर हुए ठाकुर इल पड़ती ये जो ठाकुर इल हुआ से टाइम रे 15 डेज ठाकुर को दैतापति सेवक माने ही पूजा करती माने जो तुम ट्राइबल वर्शिप हुए से 15 डेज रे 15 डेज रे ठाकुर को ट्रीटमेंट करा जाए ता माने डेफिनेटली जो फुलुरी तेल से टाइप मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन सब दिया जाए बेसिक सीजा माने जो 56 भोग जोड़ा खाती ठाकुर सेटा दिया जाए बेसिक सीजा फूड दिया जाए तामाने देह खराब जतले हला ह्यूमन भलिया तांको ट्रीट करा जाए तो सेही ट्रीटमेंट पाइबा पई सेतबेल को एई पर्टिकुलर रिचुअल चले जो तरीके केही तांको विजिट करिवे नाही द अनसर रिचुअल इज दैट पर्टिकुलर रिचुअल व्हिच कंटिन्यूज फॉर 15 डेज तापरे तांकर नव यौवन दर्शन हुए जो तरीके से ठाकुर माने समस्त को देखा दियंती एंड देन द रथ यात्रा फेस्टिवल स्टार्ट्स करेक्ट तो एबे जे देखिबा पब्लिक बाथिंग ऑफ डेटीज एटा कोन हेगला एटा स्नान पूर्णिमा हेगला तो दिस विल नॉट बी द आंसर period when deities remain inaccessible due to illness definitely this is the anasara ritual जोटा कि 15 days पई से माने inaccessible रहंती for the worship purpose chariot pulling ceremony एटा रथ यात्रा secret midnight worship एटा secret midnight worship ता केवल नवकलेवर टाइम रे हुए घट माने जो घट परिवर्तन कहा जाए घट परिवर्तन माने ब्रह्म जो दिया जाए फ्रॉम द ओल्ड आइडल्स टू न्यू आइडल्स सेटा गोटे मिडनाइट रे ही सीक्रेटली वर्शिप हुए दैट इज कॉल्ड एज द सीक्रेट मिडनाइट वर्शिप घट परिवर्तन नवकलेवर टाइम रे ही हुए आउ जो सीक्रेट वर्शिप जदी कहे हबो ताले डेली सीक्रेट भी गोटे वर्शिप हुए सेटा होची तमरो पहरा टाइम रे राती रे ठाकुर खाई साला पर जतो सोइबे सेटा भी गोटे वर्शिप हुए बट दैट इज नोन जोटा सीक्रेट वर्शिप कहा जाए सेटा घट परिवर्तन टाइम रे हुए आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस द आंसर इज बी गुड जो मैंने बी आंसर देछो यू ऑल आर करेक्ट करेक्ट which of the following art forms is primarily associated with cloth based scroll painting easy question फटाफट आंसर करो we'll move forward
there is a sibling. There is a sibling in Lingaraj temple. It is basically hidden under decoration. गोटे लुहार बहुत बड़ decoration अच्छी तो से लुहा माने सॉरी लुहा को सिल्वर रो बहुत बड़ decoration अच्छी that has been covered on the शिवलिंग ଆଉ सेटा माने basically ancient time रे लोक माने जतबेले accessible थिले to the शिवलिंग तो सेटा deterioration form रे आस्तला तो somewhat the rock was breaking तो सेटा को preserve करिया पई that has been covered and that is why it is not visible to all of the people but there is a शिवलिंग at Lingaraj temple correct good चलो वेरी गुड समस्त को तालपत्र चित्रटा बेसिकली कौन तालपत्र रे हुए तो तालपत्र रे जदि चित्र है तालपत्र चित्र किंबा ताल पाट चित्र बोली कहा जाए पाट चित्रटा ही तुमर क्लॉथ ऊपर हुए पाटटा माने क्लॉथ क्लॉथ ऊपर तुमर पेंटिंग जोटा हुए सेटा पाट चित्र ज्योति चिता तो आमर माने सब फेस्टिवल सब फंक्शंस रे हुए सौरा पेंटिंग एटा हो ट्राइबल पेंटिंग जोटा वॉल्स ऊपर हुए बेसिकली म्यूरल टाइप स्टाइल ऑफ पेंटिंग हुए तो दैट इज व्हाई सौरा पेंटिंग इज नॉट दी आंसर ए सब आंसर कटि जीव पाट चित्रटा तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ आंसर एटा समस्ते जानी ही थिबो तो वी डोंट हैव टू डिस्कस मच इनटू दिस क्वेश्चन दिस वाज एन सेगमेंट राइट नेक्स्ट आंसर कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स के कहा से तो परफेक्टली मैच ही के अछि फटाफट you write you give the answer or else I will also discuss will not waste much of time here easy अछि question yes good Gumra is basically sorry Gumra is basically the name of the drum correct तो सेउटू सेटा जन्म हुए Gumra dance and Gumra dance is popular in Kalahandi this is Talkhai festival rises from prominently from Sambalpur but it is also celebrated in Bolangir and Kalahandi भी celebrate हुए this is also true Chhau festival ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି Chhau derives its word from Chhauni and it was a basically warrior style of dance and एटा एबे मयूरभंज रे सेलिब्रेट होची तार तीनटा सेगमेंट अछि झारखंड रे भी हुए बंगाल रे भी हुए मयूरभंज रे भी हुए तो Chhau festival is associated with Mayurbhanj all of these statements are correct right next which of the following does not have a GI tag approved कहा भितरे आंको भितरे कहा को GI tag मिली नाही yes कहा को GI tag मिलनी GI tag रो पूरा लिस्ट तुमको मिली छी GI tag रो पूरा लिस्ट तुमको मिली छी ना नहीं कोटपाट टेक्सटाइल GI tag लिस्ट रे नहीं तो GI tag लिस्ट दे जी सेठी मु कोटपाट टेक्सटाइल डिस्कस करनी कोटपाट टेक्सटाइल पाखरे GI tag अछि नेक्स्ट प्योर सीरेड आउट अछो संबलपुरी इकत को कोन कोट GI tag मिलनी संबलपुरी इकत फास्ट रे थिबो तमरो टेक्सटाइल रे संबलपुरी इकत डबल इकत स्टाइल एटा को फास्ट रे GI tag मिली थिबो पुनी ऑल करेक्ट गोटे कोन समस्त को GI tag मिली छी ढोकरा मेटल क्राफ्ट को GI tag मिली नाही all of the above have achieved GI tag ढोकरा मेटल क्राफ्ट को GI tag मिलेनी तो आंसर कोन हबो the ढोकरा metal casting is based on the lost wax technique casting style ଆଉ सेति पई सेटा एबे GI tag available करी नाही right will avail if possible कि further days रे avail करबो but एबे जे ढोकरा metal craft रे GI tag नाही correct pure सीरे डाउट थिला मोनालिसा तापर सब ऑल करेक्ट केमती हे गेला अरे बुझ पाला ना नहीं तुमको GI tag लिस्ट दिया है check it once good next which text is considered the primary source of temple rituals in Jagannath temple आ भितर कोटा Jagannath temple कर primary source this is also an easy question हला
फटाफट आंसर करो। स्कंद पुराण बेसिकली कहा ऊपर लिखा है? स्कंद पुराण लिखा है शिव पार्वती को पुओ कार्तिक ऊपर, करेक्ट। तो से स्कंद पुराण इज देयर। स्कंद पुराण कार्तिक अचीवमेंट्स, कार्तिक माने त्रिपुरासुर हत्या ये सब बद्ध विषय लिखा है स्कंद पुराण इज स्टोरी ऑफ कार्तिक। देन मादला पांजी, मादला पांजी तो समस्त जानिछ जगन्नाथ ट्रेडिशन, एवरीवन नोज दैट। तो से आखि बुझी मादला पांजी आंसर टिक कर दवा कथा। ब्रह्म पुराण, ब्रह्म पुराण इज द क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा को क्रिएशन ए कॉस्मोलॉजी, जीनोलॉजी एंड ऑल ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड से विषय लिखा है। विष्णु पुराण रे भी से सेम जिंस अछि, विष्णुंकर स्टोरी एंड विष्णुंकर इवोल्यूशन माने रूप तांकर जति तमरो कल्प आ तमरो जति अछि जाबी माने तमरो टाइम स्केल अछि, युग अछि, ए सब भितरे विष्णु पुराण ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ऑब्वियसली द आंसर इज मादला पांची, जोटा कि सब ईयर विजय दशमी रे अपडेट हुए। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ड्रम क्रॉनिकल, काहेकि सेटा राउंड सेगमेंट रे लिखा जाए, तो सेटा राउंड राउंड पेपर से लिखा जाए, ड्रम क्रॉनिकल बोली कहा जाए। मादला पांची ही माने गोटे रनिंग क्रॉनिकल, सेटा सब वर्ष अपडेट हुए, तो दैट इज अ रनिंग क्रॉनिकल। आ जगन्नाथ मंदिर रे एस्टैब्लिशमेंट हवा पाखरु मादला पांची लेखा होउची। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ अनंत वर्मन छोड़गंग देव दिस मादला पांची segment has started, right? So it is completely dedicated on the Jagannath temple and the temple rituals हो, temple development हो, temple authorities हो, ये सब मादला पांजी ऊपर ही लिखा है, right? Next, consider the following statements. The Natha cult, I have not described the Natha cult, but Natha cult I had given in the small description. Natha cult विषय रे कहिथिली। Natha cult emphasized hatha yoga and individual spiritual discipline. Bhakti movement in Odisha was closely linked with Jagannath tradition. Mahima dharma relied on temple institution for propagation. आ भितर कोटा statement correct अछि बोली को। If you do not know the answer also, माने नाथा कल्ट जदि तमे जानि भी ना हो ताहले भी तुमको आंसर मिल जिवो। You have to understand that particular fact कि आंसर हमको फाइंड आउट करिवार अछि, सब आंसर जणा थिबो बोली माने नाही। क्लियर? ओके, ए 1 and 2 ओके। आउ कार किछि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड स्टेटमेंट ही एलिमिनेट कर दबा। कोन पई? थर्ड स्टेटमेंट कहउची जे दी महिमा धर्म रिलायड ऑन टेंपल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोपागेशन। मु कहली जे महिमा धर्म वाज प्रोपागेटेड बाय महिमा गोसाई, तांको धुलिया गोसाई बोली कहा जाय, काहेकि ना से पुरी रे पुरी बीच रो धुळे ऊपर सुथले। तांकर बहुत सारा डिस्कशन अछि विद दी मुक्ति मंडप ब्राह्मण्स, मुक्ति मंडप रे जो ब्राह्मण मान बसंती तांको संगे महिमा गोसाईंकर बहुत सारा डिस्कशन अछि। बट महिमा धर्म इज प्रीचिंग एब्सोल्यूट मोनोथेइज्म। मोनोथेइज्म माने सिंगल गॉड, तो सेति पई से डेफिनेटली आइडोलेट्री हिसाब रे आइडोलेट्री रो अगेंस्ट रे थिले। आइडोलेट्री अगेंस्ट रे जति थिबे ताहले से टेंपल ऊपरे प्रोपागेशन पाई केबे भी डिपेंड करिवे नाही, टेंपल अगेंस्ट रे प्रोपागेशन करूथिबे। दैट इज व्हाई थर्ड स्टेटमेंट को हमें सेमती ही एलिमिनेट करि दबा। थर्ड स्टेटमेंट को जदी एलिमिनेट करि दबा ताहले कोन हबो, राइट? तो बेसी हमको जिनस आइडेंटिफाई करिवार भी नाही। नाथ कल्ट वाज प्रोपागेटेड बाय मत्स्येंद्र नाथ, मु तुमको सेटा भी लास्ट क्लास रे कहितली, जस्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन। मत्स्येंद्र नाथ को द्वारा प्रोपागेशन हेतिला। सबुठु इंपोर्टेंट ओडिसा रे जे ताको प्रोपागेट कले वाज गोरखनाथ। गोरखनाथ प्रोपागेटेड इट इन ओडिसा एंड गोरखनाथ टेंपल इज आल्सो देयर इन जगतसिंहपुर। जगतसिंहपुर मंदिर भी अछि, गोरखनाथ मठ भी अछि सेठी। तो तांको द्वारा नाथ कल्ट प्रैक्टिस करा जाय। नाथ कल्ट फोकसेस ऑन योगिक पोस्चर्स माने सुप्रीम सेल्फ डिसिप्लिन अटेन करबा पई फोकस करंती। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। भक्ति मूवमेंट इन ओडिशा वाज क्लोजली रिलेटेड टू जगन्नाथ ट्रेडिशन, दैट इज आल्सो ट्रू। श्री चैतन्य महाप्रभु जतरा आस्थिले पुरी को जगन्नाथ ट्रेडिशन को ही पॉपुलराइज करा हेतला आ सेउठु ही भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हेतला। एंड देयर पंचसखा मानकर भी इन्वॉल्वमेंट तमे देखिबो। पंचसखा को जदि समस्त मन रखिछ ताहले वेल एंड फाइन, जदि पंचसखा को न भी मन रखिछ ताहले यू कैन रिमेंबर बजाज, करेक्ट, बलराम दास, अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, देन आसीबा आनंद दास एंड जसवंत, करेक्ट। एमिति करके तमे पंचसखा को भी मन रखि परिबो, जे कि भक्ति मूवमेंट को अधिका प्रोपागेट करथिले इनसाइड ओडिसा। ओडिसा रे सांको अधिका प्रोपागेशन करा हेतला भक्ति मूवमेंट, राइट? चलो आगु बढ़िबा। Consider the following statements and pick the statement that is incorrect. Incorrect statement को pick up करियार अछि। गोटिपुଅ dance is traditionally performed by young boys between the age group of 6 to 14. एटा तो समस्त को जाना थिबो, this statement is true. The young boys admitted to be गोटिपुଅ dancers are trained in akhadas. This statement may be confusing, right?
they must be able to perform बंध नृत्य टा कोन आ ताकू परफॉर्म करि पारुथबा दरकार कि नाही सेटा भी हमें देखिबा they were an offshoot of ओडिसी रो गुटा offshoot थिले try to answer ओडिसी रो गुटा offshoot हेकी गोटी पो बाहरला okay चलो यश विश्वजीत has given the answer बाकी समस्त भी आंसर दे चलो if you want to correct the initial dance was mahari correct महानारी ए विषय हम क्लास रे डिस्कस करछे महारी रु दीटा ऑफशूट हेले one is your गोटीपुआ and the other is your ओडिसी जेतले देवदासी नृत्य बैन करा गला किंबा तार प्रैक्टिस टाको बंद करा गला सेते बेले महारी रो डांस टा लोप पाई गला माने एंटायरली इट वाज कैंसल्ड महारी डांस जेतले लोप पाइला ताहले स्त्री लोकंकर नाचटा जगन्नाथन पाखर दिया जीव नाही बोली कहि कि इनिशियली गोटीपुआ डांस फॉर्मेशन हला गोटीपुआ डांस फॉर्मेशन हला यंग बॉयज बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 दे आर ट्राइड टू बी दी गोटीपुआ डांसर्स आ सेमान को अखाड़ास रे ही ट्रेन करा जाए तांकर फिजिकल पोस्चर्स जोटा तमरो बंधन नृत्य कहा जाए बंधन नृत्य माने फिजिकली से माने गोटे गोटे बहुत इंपोर्टेंट पोस्चर सेलिब्रेट करंती जोथरे कि तांकर फिजिकल डिसिप्लिन ता देखा जाए आ फिजिकली से माने एमिति स्ट्रिक्ट पोस्चर किंबा डिफिकल्ट पोस्चर को माने बंधन नृत्य जोड़ा कहा जाए डिफिकल्ट पोस्चर को भी अटेन करते तो सेत पे तांको फिजिकल ट्रेनिंग अंडरगो करिया को पड़े एंड दे वर ट्रेन्ड इन अखाड़ास दैट इज आल्सो करेक्ट बंधन नृत्य भी परफॉर्म करंती दैट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट बट एटा ओडिसी रो गुटे ऑफशूट बोली किछि माने नाही ओडिसी इज एन ऑफशूट ऑफ महरी गोटीपुआ इज आल्सो एन ऑफशूट ऑफ महरी कहा जाए जे गोटीपुआ रो डेवलपमेंट परे आउ थरे जेतबेले माने डेवलपमेंट हला डांस फॉर्म रो क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस रे सेतल को आउथरे ओडिसी आसिला तो इट कैन बी कॉल्ड एज कि गोटीपुआ इज ऑफ माने ओडिसी इज ऑफशूट ऑफ गोटीपुआ इज नॉट एन ऑफशूट ऑफ ओडिसी काना गोटीपुआटा ओडिसी पूर्वरु बाहरी आसितला तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग करेक्ट बाकी सब स्टेटमेंट तो सेमति भी आई हैव एक्सप्लेन्ड बाकी सब स्टेटमेंट सेमति भी ठीक अछि ओडिसी रो ऑफशूट एटा हबो नाही इट इज एन ऑफशूट ऑफ महरी ओडिसी एंड गोटीपुआ बोथ आर ऑफशूट ऑफ महरी कल्चर करेक्ट हला यश जदि तमे करेक्ट स्टेटमेंट हिसाब रे कहउछो जे ऑफशूट बोली ताहले तमर आंसर भूले काना मु कोन कहै छी इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो ऑफशूट ऑफ ओडिसी दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इफ यू आर सेइंग दैट यस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ताहले इट इज तम आंसर इज करेक्ट राइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सोरा पेंटिंग्स नंबर दिया है ना नंबर सोरा पेंटिंग्स आर ritualistic in nature correct they are primarily done on cloth they depict tribal cosmology कोटा ठीक अछि which of the statements are correct yes सोरा पेंटिंग्स आर ritualistic ना नहीं फर्स्ट सती को ऑल देखिबा सोरा पेंटिंग्स आर ritualistic सोरा पेंटिंग्स आर ritualistic because they are primarily focused on their deity tribal deity इदिताल को सेंटर मानी की समान ए पेंटिंग करंती जोटा को स्टिक फॉर्म ऑफ पेंटिंग बोली मु कहितली सोरा पेंटिंग्स आर स्टिक फॉर्म ऑफ पेंटिंग जोतरे एम्ति लाइंस ड्रॉ करी की से माने प्रायतो इमेज को तयारी करंती तो दीज आर सोरा पेंटिंग्स तो सोरा पेंटिंग रे एमिति मैक्सिमम हुए ए सोरा पेंटिंग्स मैक्सिमम कोठी बिल्ट हुए सोरा पेंटिंग्स आर प्राइमरली डन ऑन क्लॉथ एंड आल्सो डन ऑन मड वॉल्स ता माने एबे भी मड वॉल्स मुरल पेंटिंग्स रे प्राइमरली देखा जाए तो ये जो प्राइमरी स्टेटमेंट ता अछि ए सेकेंडरी स्टेट माने सेकंड स्टेटमेंट ता एटा टिके डेविएटिंग स्टेटमेंट काहे कि तांकर जो सोरा पेंटिंग स्टार्ट हेतला सेटा वॉल्स ऊपर बिल्ड करा हेतला माने सोरा पेंटिंग्स बिगन एज मुरल पेंटिंग्स एंड देन दे ग्रेजुअली डिपिक्टेड these paintings on cloth रे भी होची पेंटिंग किछ अछि नै बहुत सारा साड़ी बहुत सारा डिजाइन्स रे सोरा पेंटिंग को डिपिक्ट करा जाउची जे प्राइमरीली सेटा क्लॉथ रे होतला बोली स्टेटमेंट टा टिके फॉल्स तो मुरल आर्ट जेहेतु हबो एटा टिके
walls upre primarily built habo. No, nonetheless, first statement is correct. Third statement, they depict tribal cosmology. This is also correct. So most probably the answer must be 1 and 3. But in some segments or some questions, this can be to be answered ठीक है. But most probably answer 1 and 3 होबा कथा. बुझि पारलो? हाँ यस क्लॉथ रे भी हुए मु मना करनी क्लॉथ रे होनी बोली क्लॉथ रे भी हुए किंतु प्राइमरी जतल से डेवलप हेतला से ट्राइबल फॉर्म ता से माने तांकर जो घर तयारी करंती जो मयूरभंज केउंझर साइड रे तुम एबे भी जदी जीवो ताल जति रूरल एरियाज रे जीवो तांको घर देखिबो जो हट घर हेतिबो से घर रो जो रेड वॉल्स हेता है ना से रेड वॉल्स ऊपर ही ए पेंटिंग गुडा को मैक्सिमम देखिया को मिले तो सेउठू से पेंटिंग जोडा को डेपिक माने ड्रॉ करा हला इनटू द क्लॉथ तो पेंटिंग जोडा स्टार्टिंग रे वॉल ऊपर हेतला तो प्राइमरीली जदि हम कहबा प्राइमरीली वॉल्स ऊपर ही हेई थाए तापरे तमरो क्लॉथ ऊपर को आसिला धीरे धीरे क्लॉथ ऊपर भी से सेम पेंटिंग्स बिल्ड हेके आसिला एबे तो डिजाइन पॉटरी ऊपर भी से पेंटिंग्स डिजाइन होची पॉटरी ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वुडन कार्विंग्स ऊपर सब आडे से सोरा पेंटिंग्स रो डिजाइन तयारी करा होची है ना नो इशू इन दैट करेक्ट ओके यस यस परफेक्ट आगु बढ़िबा which of the following festival is associated with agricultural prosperity in western Odisha? Blind answer, blindly answer मार दबो अरे होबा ना नहीं blindly क्वेश्चन देखबा आखि बुझी के आंसर मार दबो आ किछि भाबिबो ही नाही गुड गुड blindly ही आंसर मारिबो you don't have to think anything Raja festival womanhood को सेलिब्रेट करा जाए both the mother earth रो womanhood को and also माने women in the society तांको भी womanhood को सेलिब्रेट करा जाए मकर संक्रांति is also a festival that माने is celebrated for the winter harvest जतरे सरे जनवरी 14 टू 15 पोंगल सहित सेटा माने कोइंसाइड करे तो विंटर हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करा जाए बट इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया वेस्टर्न ओडिशा स्पेसिफिकली पचारिछि एंड इट इज नुआखाई जोटा कि गणेश चतुर्थी पाखा पाखी गणेश पूजा टाइम रे ही सेटा पड़े कार्तिक पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड जतबेले डंगा माने बोइतो भसाणी एंड कार्तिक पूर्णिमा माने द मंथ ऑफ कार्तिक पूर्णिमा जो स्टार्ट हो सेतबेले सेलिब्रेट हुए तो दिस हैज नथिंग टू डू विथ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ए तीनटा आंसर भूल हे जिवो आ कोन हे जिवो बी विल बी द आंसर करेक्ट नेक्स्ट which architectural element separates Bada from Gandi मु कहितली तुमको दीटा क्वेश्चन आंसर मैं एकाथरे तुमको देखाई दोछि स्टार्टिंग रे सेत पे से इमेज ता तुमको देखाइतली से इमेज रो डिपिक्शन तारू ही कहि परिबो कोउटा बाड़ आ गंडी को अलगा करे बाड़ आ गंडी भितरे कोटा तमरो डिमार्केटिंग मार्क कोटा रुहे सेटा तमे देखो अम्लकटा होची तमरो कोन मस्तक ऊपर अछि एटा हबो नाही अम्लकटा सब टॉप रे अछि तो बाड़ाटा तमरो लोअर पार्ट गंडीटा तमरो मझी पार्ट कळस भी टॉप रे अछि एटा भी हबो नाही राहा पाग भी तमरो गंडी पार्ट रे अछि एटा हबो नाही पारंडा मु तुमको इमेज रे भी आ पूर्व जस्ट देखाइतली पारंडा जोटा रहिबो सेटा ही तमरो बाड़ आ गंडी मझी रे डिमार्केटिंग लाइन टा रहिबो करेक्ट इमेज देखाइ देइतली चल आई शो इट वंस अगेन आउथरे गूगल जीवा पड़िबो पुनी इमेज डाउनलोड करे पड़िबो आगु स्टार्टिंग रु देखाइ देत जो स्टार्टिंग रे अछन तो देखि देबो आ जो माने स्टार्टिंग रु आसी ना हो जो एबे जॉइन कलो आउथरे जतले क्लास टा को टिके स्टार्टिंग रु रिवाइंड करके भी देखि दे पारिबो तो तुमको से पूरा इमेज टा देखाइ जिवो आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट इमेज clear match the following which of the following is not correctly matched आ भितर कोटा करेक्टली मैच हे नाही फर्स्ट गुड मोनालिसा यश तमर कोन यश विश्वजीत व्हाट इज योर आंसर एनी पिपली रे एप्लिक वर्क हुए एटा हमें क्लास रे डिस्कस करिसे एप्लिक वर्क टू फॉर्म्स ऑफ एप्लिक वर्क मेटल एप्लिक वर्क क्लॉथ एप्लिक वर्क दीटा जाको एप्लिक वर्क मु तुमको देखैछि कि बुझैछि राइट संबलपुरी इकत बंद कला स्टाइल जो क्लॉथ को वार्प एंड वेफ्ट
बंधा जाए बंधकला स्टाइल एटा संबलपुरी इकत एटा भी करेक्टली मैच्ड कटक रे रघुराजपुर पाटचित्र ए दीटा जाक सेम ऑप्शन स्टोन कार्विंग is basically popular in पुरी कोणार्क आड़े स्टोन कार्विंग इज पॉपुलर तो दिस इज रॉन्ग बाकी सब ठीक अछि करेक्ट रघुराजपुर भी पुरी पाखरे पाटचित्र कटक रे भी पाटचित्र हुए कटक रे आ गोटे इंपोर्टेंट प्लेस होची एंड कटक रे कोन हुए सिल्वर फिलिग्री वर्क is famous from Katak. So that is why Katak is famous. बुझी होची got it? Next, which of the following is not which of the following handicrafts of Odisha is distinguished in use of double ikat technique? Double ikat technique रे कौन हुए? Double ikat technique रे if this is a particular cloth एटा जदि गोटे कपड़ा हुए ताहले एठी हॉरिजॉन्टल रे भी सूता बंधा जाए और वर्टिकल रे भी सूता बंधा जाए वर्टिकल रे भी एमती ता आसे तो बेसिकली एमती वर्टिकल रे सूता रुहे ता ऊपर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स क्लॉथ गुडा को माने हॉरिजॉन्टल रे सूता पास करा जाए एटा गोटे क्लॉथ फॉर्मेट हुए एटा को कोन कहआ जाए दिस इज कॉल्ड एज वेफ्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेसिकली जदि ओपीएससी रे कार होम साइंस थिबो देन दे मस्ट बी नोइंग तो वार्प एंड वेफ्ट बोथ आर डिप्ड इन क्लॉथ्स ता माने एबे कोन सिंपली सिंगल इकतरे कोन हुए ए वार्प थ्रेड गुडा को बंधा जाए किछरा जगह रे बंधा जाए गैप रखी बंधा जाए देन कलर डिपिंग हुए तो एटा को रेजिस्टेंस डाइंग कहै जाए तो जोडी बंधा हेतिबो सेठी कलर टा चढ़िबो नाही ता माने थ्रेड ऊपर सेठी कलर टा चढ़िबोनी तो व्हाइट जे कोनसी कलर धर येलो रे डिप करा हैची व्हाइट येलो एमती मिक्स थ्रेड आसीबो व्हाइट ग्रीन व्हाइट रेड एमती मिक्स थ्रेड आसीबो वार्प जदि डिप करा हला केवल ताने एटा को सिंगल इकत कहै जाए यदि वार्प एंड वेफ्ट बोथ दी थ्रेड्स आर डिप्ड फॉर रेजिस्टेंस टाइम ताल सेटा को डबल इकत कहा जाए आ ए दिनसटा कोठी हुए कोटपाट टेक्सटाइल रे तो डेफिनेटली हुए नहीं काहे कोटपाट टेक्सटाइल तो पूरा हैंडलूम हला माने टसर सिल्क कॉटन सबुतरे हुए बट ट्राइबल फॉर्म ऑफ माने वीविंग स्टाइल तंगर थाए तो ट्राइबल फॉर्म ऑफ वीविंग स्टाइल जेहेतु थाए कोटपाट टेक्सटाइल तो हबनी फेर तो सेमिति भी कैंसल आउट करबा बोमकाई टेक्सटाइल इज आल्सो नॉट वेरी पॉपुलर फॉर माने डबल इकत सिस्टम बोमकाई टेक्सटाइल नो डाउट इकत स्टाइल ऑफ वीविंग को यूज करंती माने ओकेजनली इकत स्टाइल ऑफ वीविंग करंती बट दे आर नॉट वेरी पॉपुलर विथ दी डबल इकत सिस्टम बरमपुरी सिल्क हबनी ए सिल्क टा केवल थिक सिल्क तारो बॉर्डर पाटा साड़ी जोड़ा को कहा जाए तो बरमपुर सिल्क इज वेरी फेमस फॉर दैट पाटा साड़ी तो सेटा भी हबो नाही इट इज संबलपुरी इकत रे संबलपुरी इकत रे जीआई टैग रिसीव करछि एंड संबलपुरी इकत रे से माने विभिन्न प्रकार रो ड्राइंग्स करंती माने स्मॉल चेक्स रो ड्राइंग भी करंती विचित्र पाटा जोड़ा को कहा जाए सेतरे माने लार्ज चेक्स ऑफ ड्राइंग भी हुए हला तमरो इंपोर्टेंट साड़ी जोड़ा को सब डिजाइन हुए तो से पे संबलपुरी इकत रे डबल इकत सिस्टम यूज दीटे जाक थ्रेड को बंधा की कलर डिपिंग करा जाए रेजिस्टेंस टाइम करा जाए क्लियर नेक्स्ट which of the following dance form originated as martial dance form आ भितर कोटा मार्शल डांस फॉर्म हिसाब रे ओरिजिनेट हेतिला एबे एटा को गोटे माने तांगर फोक डांस रे शामिल करी कि से सेलिब्रेट करू ओडिसी तो कल्चरल डांस एटा तो मार्शल हबनी सेरा को तो सेमती एलिमिनेट करो देन ए तीनटा भितर को ओडिसी जेमती पळेला गोटी को भी सेमती पळेबो आइदर डाल खाई नहले छौ आ भितर कोटा गोटे मार्शल फॉर्म हेतिबो आ पूर्व क्वेश्चन ही कहली छौ हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड छाउणी एटा ही तमरो वॉरियर फॉर्म ऑफ डांस थेला एंड दिस ओरिजिनेटेड एज ए मार्शल डांस फॉर्म इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू करेक्ट डालखाई फेस्टिवल और डालखाई डांस फॉर्म इज आल्सो वेरी पॉपुलर बट इट इज फॉर द ट्राइबल वर्शिप माने जो दुर्गांकर ही गोटे देवी डालखाई तो डालखाई गुप्तेश्वर जाओ कि तुम वेस्टर्न ओडिशा जाओ डालखाई सेलिब्रेशन माने डालखाई फेस्टिवल इज आल्सो celebrated so dalkhai dance is not basically a martial dance it is basically a tribal dance form right आ पूर्वरु ही छौणी छाउ विषय डिस्कस करथिली छौ फेस्टिवल विषय तो सेत पे एबे एठी आ बेसी डिस्कस करूनी मयूरभंज रे हुए ओडिसा रे देयर ऑल आर कॉमन पॉइंट्स नेक्स्ट consider the following statements regarding religious developments in Odisha
Religious development Shaivism dominated early temple architecture in Odisha. Shaivism dominate करथिला. Vaishnavism gained prominence with the rise of Jagannath cult. Okay. Mahima Dharma rejected idol worship and Brahminical ritual. Which of the following statements are correct? Early temple architecture in Odisha, Brahmeshwara temple, Parsurameshwara temple, Mukteshwara temple. Yes, Shaivism dominated the temple architecture because Jagannath cult setalku develop hei nathila, and Jagannath cult develop hela belku it was already 11th century. So definitely first statement to theek achi. Second statement, Vaishnavism gained prominence with the rise of Jagannath cult. Vaishnavism gained prominence with the rise of Jagannath cult. এই স্টেটমেন্ট কু কোন তুমি ଦି ତିନିଟା ଆଙ୍ଗେଲ ରୁ ଦେଖି ପାରିବ। ଆ ପୂର୍ବରୁ କୋଣ ବୈଷ୍ଣବିଜମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା କି? ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ବୈଷ୍ଣବିଜମ ଥିଲା, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ଟ ତିଆରି ହବା ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ରେ ବି ଦି କଲଚର ଅଫ ହରିହର କଲ୍ଟ। ହରିହର କଲ୍ଟ ମାନେ ଶିବ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ वन गॉड वर्शिप କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବିଜମ ପ୍ରୋମିନେନ୍ସ ଗେନ୍ କଲା। यस डेफिनेटली एटा हेताई पारे जे जतबेले गीत गोविंदर कंपाइलेशन हला जगन्नाथ संस्कृत परे आ तापरे शारदा दास ओडिया महाभारत जतबेले लिखिले देन वैष्णविज्म बिकेम वेरी पॉपुलर इन ओडिसा। बट एमिति ता माने नहे जे वैष्णविज्म ता आगरु नथिला। तो स्टेटमेंट टाको गोटे डुअल हेडर फॉर्म रे देखिया को पड़िबो। सेकंड और थर्ड, महिमा धर्म रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एंड ब्राह्मणिकल रिचुअल, सेटा ता हमें जानचे। थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तबे मते को आंसर कोन हबो? ओके मना से योर्स इज ऑल करेक्ट। आ बाकी यश बाकी जो माने सब अछंती भी कैन आंसर, किछ असुविधा नाही। व्हाट विल बी द आंसर? All three are correct, right? Vaishnavism gained prominence with the rise of Jagannath cult. Yes, that is true. Vaishnavism got a separate sect हिसाब रे prominence gain करिबो जतबेले जगन्नाथ कल्चर को भी इम्पोर्टेंस मिलिबो, जगन्नाथ कल्चर डेवलप होबो, सेतबेले ही वैष्णविज्म ग्रो करिबो। तापरे ही आमे देखिबा चैतन्य महाप्रभु आसीबे, भक्ति मूवमेंट बढ़िबो, वैष्णविज्म गोटे लार्ज स्केल रे बढ़िबो। नले ता पूर्वरु कोन थिबो? बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म एगुडा टिके बेसी प्रोमिनेंट हेकी थिबो ओडिसा भितरे। ता भितरे ओडिसा भितरे आमे नो डाउट देखुचे लिंगराज कल्ट रे हरिहर कल्ट अछि, बट सेपरेट वैष्णविज्म रो कल्ट बहुत थ्राइव करूची, सेमिति आमे देखिया को पाउने। जगन्नाथ कल्चर वर्शिप हे सला परे ही श्रीकृष्ण गीत गोविंद रे श्रीकृष्ण सहित मैच करा जिवो, देन तमरो ओडिया सरला दास ओडिया भावार्थ रे तुमको संगे मैच करा जिवो, आ तापरे वैष्णविज्म रो प्रोमिनेंस ता बढ़िबो। करेक्ट? तो प्रोमिनेंस कथा जदि कहबा, हां यस जगन्नाथ कल्चर डेवलप हे सला परे ही प्रोमिनेंस ता बढ़िला। नेक्स्ट, consider the following statements regarding the Bhakti movement in Odisha. The Panchasakha saints promoted devotion through vernacular Odia literature. This statement is true. ebe ही just discuss करूथली मु। पंचसखा माने थिले बलराम दास, अच्युतानंद दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास, करेक्ट, एंड तमरो आनंद दास। एमान समस्ते लिटरेचर थ्रू रे भक्ति मूवमेंट को अधिका पॉपुलर कले। बहुत सारा भजन, कीर्तन, पोएट्री एगुडा सब लिखि कि ठाकुरंकर गुणगान कले आ भक्ति डायरेक्टली भक्ति केमती करि परिबो से सब दिन रे लोकन को अवगत कराइले। First statement is correct. Second statement, the movement emphasized equality and opposed rigid caste distinctions. एटा भी definitely true. भक्ति movement रो sole concept ही थिला the against casteism in the society. No doubt ओडिसा रे सेमती casteism अधिकारु अधिका तो केबे देखिया को मिलेनी, माने rigid casteism तो देखिया को मिलेनी, but then also some of the segments are very strongly following the particular caste society. तो ता against रे ही पंचशखा ट्रेडिशन और the भक्ति movement से फाइट करूथिले। तो कौन सी प्रकार कास्ट बैरियर होबा कथा नुहे इन अचीविंग गॉड, भगवान को प्राप्ति करिया पे। सो से बळे फिलोसॉफी सेठी प्रोपेगेट करा जाउतला। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थर्ड, इट रिमाइंड कन्फाइंड ओनली टू रॉयल पैट्रोनेज एंड डिड नॉट रीच द मासेस। इफ दिस स्टेटमेंट इज टू बी एनालाइज करके मतलब फटाफट को आंसर कोन हबो? यस फास्ट दीटा स्टेटमेंट तो मु कह दिल, तुम खाली थर्ड स्टेटमेंट एनालाइज करिया अछि। थर्ड स्टेटमेंट एनालाइज करके आंसर कहिया अछि। हबो हबनी? It remained confined only to the royal patronage and did not reach the masses. The statement is also correct. In the failure of Bhakti movement in India, आमे सबले से कथा रे डिस्कस करू जेति कि सब टॉप क्लास ए भक्ति मूवमेंट पढ़ेला भी क्लास रे कहतिली
ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ଅପର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରୋପାଗେସନକୁ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କଲେ। ଯୋଉମାନେ ଲୋଅର ମାସେସରେ ରହିଗଲେ ଲେବର କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ ଦି ଫାର୍ମର କ୍ଲାସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ବି ପଡୁନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯାହାକୁ ବି ଫଲୋ କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା, ଏକ୍ସଟର୍ସନ ହଉଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ପହଞ୍ଚି ହିଁ ପାରିଲାନି। এইମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଥିଲି, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପପୁଲାର ହେଲା ବିକଜ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସିଆ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏଇ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ କରାଉଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କମିଟି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ବାକି ଲୋଅର ମାସେସକୁ ସେମାନେ କେବେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କେବେ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରମୋଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାକି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ରିପଲ୍ସନ ବି ମିଳିଲା, ବଟ୍ ମାସେସକୁ ସେମାନେ ଟଚ୍ କରିପାରିଲେନି। ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଅଲସୋ, ତ କଣ ହେଇଗଲା, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ କ୍ଲିयर। अरे क्लियर ना नहीं। The success of Mahima Dharma as a social religious movement in Odisha can be primarily attributed to कहीं सक्सेस हला महिमा धर्म सोशल रिलीजियस मूवमेंट हिसाब रे ओडिसा रे कहीं सक्सेसफुल it is its synthesis with Vaishnavism and Jagannath tradition पाई महिमा धर्म सक्सेसफुल हला। Rejection of idol worship and emphasis on a formless absolute alek तापे हला। Dependence on royal patronage and temple institutions or it focus on urban elites and Sanskrit scholars both पाई एटा अधिका पॉपुलर हला। I'm helping you here. Its synthesis with Vaishnavism and Jagannath tradition पाई एटा पॉपुलर है नहीं। महिमा धर्म एब्सोल्युटली माने मोनोथेइज्म को वर्शिप करूची तो आइडल वर्शिप अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट इज इट माने स्टेटमेंट इज ट्रू बट एटा ही तार रीजन कि नाही सेटा तो आइडेंटिफाई करबा ना। इट इज इट्स डिपेंडेंस ऑन रॉयल पैट्रोनेज एंड टेंपल इंस्टीट्यूशंस ऊपर से डिपेंड करू नथले तांग संगे आर्गु करथले तो ए स्टेटमेंट भूले। इट्स फोकस ऑन अर्बन एलाइट्स एंड संस्कृत स्कॉलर्स दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स कहीं ना भीमा भोई जेतेबेले सेटा को प्रोपागेट करबा स्टार्ट करिवे सेतेबेलकू से नो डाउट दे माने ही हैड रिटन अ लॉट ऑफ थिंग्स संस्कृत एंड ऑल बट एटा संस्कृत पाई ही पॉपुलर हला सेमथिन पे बेसिकली एटा आइडल वर्शिप अगेंस्ट थिला एंड कोनसी प्रकार रो मंदिर को जीवा दरकार नाही जदि तमे निजे भक्ति करि परिबो ताहले तमे डिवाइनिटी अचीव करिवो सेही कांसेप्टटा थिला एंड दैट इज व्हाई इट वाज पॉपुलर अमंग द पीपल। बेसिकली ढेंकानाल जोरांडारे तमरो महिमा धर्म अधिका पॉपुलर अछि सेठी महिमा गद्दी भी अछि एंड सेति पई सेटा अधिका सेही एरिया वेस्टर्न ओडिसा ढेंकानाल ऊपर को सेटा अधिका पॉपुलर हला राइट। ताठो अधिका किछि नाही। विथ दिस we are ending session. This will be all from my side today. I hope you liked the questions. These were some of the analytical questions of art and culture. एडा रहला analytical question तो थरे कि fundamental concept को रिवाइज करबा पई मैं क्वेश्चन करके आनथिले। नेक्स्ट सेगमेंट रे मु तुमको क्वेश्चंस आई मे बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब और नॉट बट ए जो ग्रुप अछि टेलीग्राम ग्रुप अछि कैक्साइस रे सेथिरे मु तुमको आउ किछटा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रो क्वेश्चन माने जेमति कोठी को मंदिर अछि कोठी को टेंपल बिल्डिंग हेछि कोठी को मठ अछि तापरे कोड कहार रिचुअल कोन को रिचुअल केमति परफॉर्म हुए तापरे इंपोर्टेंस ऑफ द स्तूप आर्किटेक्चर इंपोर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस जोडा का लिस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन रे देखिथिले तो से इंस्क्रिप्शंस प्लेट कॉपर इंस्क्रिप्शन रो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस around 50 to 100 questions मु तुमको दे देबी तो 50 questions 50 to 60 questions will be enough तो सेमती questions भी मु तुमको factual questions सेही ग्रुप रे अपडेट कर देबी you practice that questions if you feel any difficulty ताले जे कोनोसी वीडियो रे मोर आर्ट एंड कल्चर वीडियो रे गोटे कमेंट दबो कि नाइ सर हमको factual question रो भी गोटे डिस्कशन दरकार तो सेतबेले मु तुमको factual question रो भी डिस्कशन करे देबी बट ग्रुप रे आई विल गिव यू सम मोर questions these were some of the questions on the conceptual analysis right तो सेतरे कोन रिवीजन ता भलो हिजबो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो कोन तमे जते प्रैक्टिस करबो सेते अधिका मने रहइबो जते तुम क्वेश्चन करबो तो बाकी सब वर्ड तो फैक्चुअल क्वेश्चन करते ही so I thought I will do a conceptual analysis. I'll give you factual questions, don't worry, you will get a lot of factual questions from my side. Practice them. If you feel any difficulty tahale mate kahibo, I'll definitely bring out that particular class also right from after today next section re tame ko class darkar regarding Odisha history please let me know in the comment box. Either we will start with the Odisha history marathon or we will start with Indian history. Indian history कोन segment रे week ताल Indian history segment भी we can start. Please let me know in the comment box which the new section you want me to come in and take a class. Otherwise else we will be resting the class here. Thank you so much for being here. Thank you so much for attending the class. I hope you do well in your examination. Goodbye.